Hello everyone. Greetings to all watching the video. I welcome you all to another episode of Convo with Apricus. Friends, our topic of discussion today is challenges and opportunities in insurance sector of India, latest trends. And to enlighten on this topic, we have Mrs. Maya Pandey with us today. She is a research fellow and faculty in Birla Institute of Management Technology, Greater Noida, Uttar Pradesh, India. She is a professional with over 30 years of experience in insurance, research, training, teaching, and is capable of multitasking. She is also a member of editorial board in Management and Finance Bulletin, one of the journals in the bouquet of Apricus Journals. Let's start the discussion with the first question. Thank you, Reshu, for giving such a humble introduction. I would love to enlighten whatever best I can on the insurance aspect. Please continue. Ma'am, in general parlance, what is insurance and how does it influences the life of common people? Reshu, to tell you frankly, insurance in fact is having a negative perception and also not understood by common man easily. Basically, insurance is to cover you for any unforeseen loss or event which is not favorable and creates a lot of financial disturbance. So it is in a way risk management tool, gives you financial risk protection for the unforeseen events, not the ones which we are able to predict. So insurance is divided into two major streams. One is life insurance and the other is non-life insurance. Life insurance covers your life. So in case there is unforeseen death of a member who is covered, then whatever sum insured or amount a family has got the insurance, that amount is paid. That is just pure life insurance. The other non-life insurance covers from your smallest thing in house like mobile phone to big things like satellites. Everything under the sun is covered. Of course, terms and conditions apply. You must have seen in every policy. Yes, okay. So anything from your household, from your cash, from gold, from jewelry to your electronic gadgets. And we all are aware of car insurance. Why? Because that is mandatory. So everyone has to take that insurance. Apart from that, there are almost hundreds of non-life insurance products which one can get cover for. So basically in layman's language, it is financial risk protection for the unforeseen event. Yes, ma'am. Ma'am, what are the key drivers of growth in the insurance sector? See, insurance is one of the BFSI. If you know what is BFSI, BFSI is banking, financial services and insurance. So ये पूरा एक sector है BFSI. In this, one pillar is banking, which covers all your public sector and private sector banks, regional, rural banks and other. The other is financial services. That is your credit card payments and other things, mutual funds and all. And third is insurance. So insurance may, as I mentioned, there is life and non-life. So key drivers of insurance are the same as key drivers for any financial sector. It's in fact one of the backbones of an economy. Bankings contribute the economy. Similarly, insurance by covering the risks contributes to economy. So the key drivers for spread of insurance are one, having disposable income. But कई बार क्या होता है कि even if you have disposable income, awareness is not there, or there is unwillingness to take insurance. Say for example, we are well-to-do people. We can easily afford house insurance, but none of us will buy that insurance. One, because there's no awareness. Two, because the perception is कि ले भी लेंगे तो the claim process may not be easy. We may not get the money. So there are hordes of things, so but one major contributor or the factor
or the key driver for growth of insurance is disposable income. The second is awareness. People are not aware, be it urban sector, be it rural. Rural mein to aur bhi awareness kam hai because education is very less, so people don't understand this concept, and wahan bhi disposable income is a major issue. Like in agriculture insurance, we cover the crops, we cover tractors, everything. But you will see farmers not opting for insurance, lack of awareness. Third key driver for growth is management of claims. People are quite wary ki le bhi le to claim is such a lengthy process, ye document, wo document, so they just don't want to get into this hassle, and they feel ki hame kuch hoga nahi, so forget it, so management of claims and policies is a major issue. Plus non-life insurance is an annual this thing. Ek bar you have taken it, after 1 year you have to again renew it. It's a continuous, तो कई बार भूल जाते हैं, कई बार we don't show interest. अब कार इंश्योरेंस तो एक ऐसी चीज है कि इट इज मैंडेटरी, आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको फाइन हो जाएगा, तो यू remember those dates. But otherwise, agar house insurance, so it happens with me also. I being from insurance, I forget renewal on time. There's no one to remind you. Of course, things are now changing because of digitalization, but then this is also a major issue, management of policy and claims. Fourth key driver is innovation. Cyber security is becoming a major issue, so insurance companies have come up with cyber insurance. So pehle mobile nahi tha, now mobile has come, so they have come up with mobile insurance. So constant innovation of products is a must. Easy to understand policy and innovation. So these are, according to me, 4 major key drivers which can ramp up the growth of insurance. Thank you, ma'am. Ma'am, I want to know, the world is going through pandemic these days. Yes. We have seen very ill days due to such pandemic. So in this case, health insurance has got prominence. It has its importance now for the common people also. Could you illustrate about health insurance, its benefits, and how has health insurance changed over the years? Thank you, Reshu, for raising this wonderful question. Health insurance has become prime most, in fact, So before this COVID and pandemic struck us, there was no cover for COVID. But now, because of regulator, we have regulator IRDA. It is made it mandatory for all insurance companies to cover COVID-like situation, and they have come up with specific policies, which is COVID coverage, COVID shield, and many other products related to COVID. So let me deal with health insurance. So health insurance is one of the products in non-life insurance. And health insurance is a wider term. So it covers 3 things. One is personal accident. 2 is Mediclaim, that whenever you have hospitalization, your medical bills are covered. And 3rd is when you travel outside and there you fall sick, so it is travel plus Mediclaim. Okay. Now, health insurance even death is covered. So basically, health insurance is to cover your very, very hefty hospitalization bills. Now, there are 3 kinds of levels in health insurance. One is primary healthcare, second is secondary healthcare, and third is tertiary healthcare. Primary में क्या होता है कि you must have seen its first level contact. Rural level पे, district level पे, या even cities में जब हम छोटे-छोटे clinics में जाते हैं, that is first level. This is primary healthcare. Second is secondary, कि जब आपको कोई major issue हो, जाना हो, आपको hospitalization हो, you have to stay in the hospital and get diagnosis. And third is tertiary, जिसमें कि बहुत ही high level के clinical या specialty hospitals की जरूरत पड़े. So these 3 kinds are there, and all 3 can be covered in your health insurance. But again, health insurance में थोड़ा सा issue ये है कि majorly they cover hospitalization. मतलब primary care अगर आप गए और आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली and within 2 hours or 3 hours you are back, तो this kind of small expenses are generally not covered, but आजकल वो भी राइडर्स के साथ हैं, add-ons के साथ कवर हो रही हैं. आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. Yes, ma'am. आयुष्मान भारत है ना. Yes, तो आयुष्मान भारत is for people, those who are not
covered under any insurance. अब हमारी इंडिया में हेल्थ जो है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, मतलब इस पे सेंटर लॉ नहीं बना सकता, ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन हेल्थ. यस मैम. अब हेल्थ इंश्योरेंस का क्या है कि जैसे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत, इसमें गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू कवर सेकेंडरी एंड टर्शियरी expenses of the people, those who can't afford health insurance. मान लो गांव में if they are enrolled for this scheme and on basis of Aadhaar enrollment takes place, and if any heavy expenditure comes in a family, कोई बहुत major surgery हो गई, कोई operation हो गया, तो it is covered free of cost under this आयुष्मान भारत, है ना. and जो स्टेट इसको अडॉप्ट करेगा वही कवर करेगा, और इसमें 75% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 25% फंडिंग अपना स्टेट गवर्नमेंट की, whichever state adopts it. Okay, this is आयुष्मान भारत. बाकी पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनका तो मैंडेटरी CGHS है, सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम में दे आर कवर्ड, एंड बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें दे टेक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एन मास फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं. इट्स मैंडेटरी, आई मीन नॉट मैंडेटरी बट जनरली आजकल सारे मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे और भी प्राइवेट कंपनी, दे आर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. अब इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है रीइंबर्समेंट, एक होता है कैशलेस. तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे हैव टाइड अप विद ऑल मेजर हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी हो चाहे जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हों उनके साथ टाई अप होता है. तो फॉर एग्जांपल आप और मैं बीमार पड़ गए और हम लोग एनरोल्ड हैं, तो वी कैन जस्ट गो, उनको अपना हेल्थ कार्ड दिखाएंगे, वील गेट द फुल ट्रीटमेंट. जितने दिन भी हमें हॉस्पिटल में रहना है, 5 दिन 7 दिन जितना भी हमें लगना है, द एंटायर अमाउंट इज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल. दिस इज नोन एज कैशलेस पेमेंट. जो दूसरा होता है रीइंबर्समेंट में, वो आई मीन यू एंड मी एम्प्लॉइज कैन चूज. तो उसमें क्या होगा कि वील गेट द ट्रीटमेंट डन, we'll make the bill payment, and those bills we'll send it to the insurance company for reimbursement. But aajkal reimbursement thoda kam chalan mein hai. This is what the change has happened over the years. Most of the people I mean opt for cashless. Thoda easy ho jata hai, you know, because you don't have to carry money, you don't have to pay and run around for cash and reimbursement. You can just directly go to the hospital in case of emergency, get yourself treated, and the hospital will directly deal with insurance company to get whatever the payment or whatever expenditure they have done on the patient. So this has happened over the years. And second thing is ki after COVID, a lot of awareness for health insurance has been generated. Pehle kya hota tha, before COVID, motor insurance premium wise used to be the major contributor. Almost 40% किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम यूज्ड टू कम फ्रॉम मोटर पोर्टफोलियो, बट नाउ 38% ऑनवर्ड्स इज कमिंग फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस. तो पीपल जागरूक हुए हैं, दे हैव गॉट अवेयर कि यस, ऐसी हालत में अगर हमें अपना पैसा खर्च करना पड़े तो लाखों निकल जाते हैं, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस भी कई फैमिलीज में आ जाती है, पेंडेमिक की वजह से जॉब्स भी गए हैं. सो नाउ पीपल आर getting aware and buying the policies on their own. So some insureds हर तरीके के हैं. You can go to the or online you can buy the policy. This is another major thing which has happened कि agent को follow नहीं करना पड़ता या आपको insurance company में नहीं जाना पड़ता. You can just log in directly online, get your policy, renew your policy for whatever amount you want, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, whatever you want. और अब तो critical illness भी cover होने लगी है, जैसे कैंसर एंड यू है. Of course terms and conditions हैं कि तुरंत आज पॉलिसी लेने के बाद आप कल क्लेम नहीं ले सकते. There is a waiting period. But nonetheless, it is a very good development which has happened. At least people have become aware, and थोड़ा सा premium pay करके if you pay and if you get such a big coverage, I think it is totally worth it. Don't you agree? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, what are the opportunities you see in the insurance sector? रेशु अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन लिंक्डइन में भी आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, सब कुछ है ना, कि अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज बिकमिंग सनराइज इंडस्ट्री फॉर फ्यूचर. आगे 10-15 साल तक इट इज रियली गोइंग टू ग्रो, जैसे अपना आईटी ग्रो किया था.
You Yes, must have ma'am. seen कि कैसे हम्म, IT में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इतना डिमांड था, उसी तरीके से इंश्योरेंस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसके 3-4 कारण हैं। एक तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बड़ी है पहले से कंपेयर टू व्हाट इट वाज 20 years बैक। दूसरा अवेयरनेस आई है, और तीसरा मल्टीनेशनल कंपनीज हैव कम इन इंडिया। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फॉरेन की कंपनीज हैं, दे आर टाइंग अप विद इंडियन कंपनीज। अब जैसे इफको टोक्यो है, तो इफको इंडियन कंपनी है, टोक्यो मरीन जापान की कंपनी है। आईसीआईसी लोम्बार्ड, तो आईसीआईसी इंडियन कंपनी है, लोम्बार्ड ब्रिटेन की है। इस तरीके से यू विल सी बजाज एलियंस, भारतीय एक्सा, ऑल फॉरेन कोलैबोरेशंस आर हैपनिंग। एंड इसकी वजह से न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी इज कमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर इंक्रीजिंग। तो अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है इंश्योरेंस में। अब नाउ सिंस आई एम टीचिंग एंड डूइंग माय रिसर्च इन बिरला इंस्टीट्यूट, देयर इज अ प्रॉपर एमबीए जस्ट फॉर इंश्योरेंस, यू नो। तो आप wow, एमबीए that's सिर्फ great. इंश्योरेंस में करके डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनीज में प्लेस हो सकते थे। अब हमारे टाइम पे क्या होता था, वी यूज्ड टू गिव ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, ऑफिसर लेवल के लिए। उस कंपटीशन के बाद आप जब क्वालिफाई करोगे तब इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे, तो 6 महीने आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 6 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। देयर वर 2 kind of trainings we used to have, and then only we could understand कि अभी क्या हो रहा है कि when you have 2 years MBA in insurance, you know so many things about insurance already, so you are directly picked up by the multinationals or corporates, you know, in the insurance. अब insurance is so wide, इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 इज अंडरराइटिंग, कि आपको प्रीमियम रेट कैसे फिक्स करना है किसी रिस्क का। 2 इज क्लेम्स मैनेजमेंट, कि क्लेम्स जब सेटल करनी है व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 3rd इज अकाउंटिंग, जितना भी प्रीमियम आ रहा है उसको अकाउंट फॉर करना, कैसे अकाउंटिंग। 4th इज सेल्स, you know, you have to go and pitch in for sales for corporate to tell them what kind of policies are available. You have to help them whenever there is a claim. Specialized products भी आ गए हैं, like ज्वेलर्स के लिए ज्वेलर्स ब्लॉक है, छोटे एसएमईज के लिए अलग एसएमई पॉलिसी है। इस तरीके से कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं, फ्रॉम फायर, फ्रॉम मरीन, उनकी इतने ट्रांजिट्स होती हैं, एक सामान दूसरी सामान जाना। एंड एम्प्लॉयज का बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मोना बोला था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन है। तो ये 4-5 अलग अलग हैं। और फिर जो बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं वो री इंश्योर होती हैं, तो री इंश्योरेंस एक अलग डिविजन है। हर डिविजन के लिए दे नीड पीपल, एंड दे नीड पीपल दोज हु हैव एजुकेशन, लिटिल बिट अवेयरनेस, और जैसे अगर एमबीए वाले हैं तो बेटर अवेयरनेस फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंजीनियर्स को फायर रिस्क में डाला जाता है, क्योंकि जब क्लेम हो तो उसको सर्वे भी करना है, सर्वेयर्स भी हैं। अच्छा, जिनका हेल्थ बैकग्राउंड है, कई लोग हेल्थ मैनेजमेंट करके आते हैं या बीएससी किए हुए हैं या डॉक्टर्स हैं, तो एक टर्म है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जितने भी ये कैशलेस क्लेम्स होती हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज उन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और जिन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट किया उनको, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड बेटर। मैं और आप क्या जानेंगे कि क्या बिल आया है, सही है नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट सही हुई है नहीं हुई है, ये बिल पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, सो ma'am. दीज आर स्पेशलाइजेशन, एंड देयर इज ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी इन द इंश्योरेंस सेक्टर, be it underwriting, be it sales, be it claims management, anything. And in fact legal cases भी बहुत आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रोड पे एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी आपको मार के भाग गई, तो वो मेडिको लीगल केस बन जाता है। तो इवन लॉयर्स हैव लॉट ऑफ opportunities in insurance company. I mean, it's now the sunrise industry, and it is just like IT which is growing. अब तो बहुत सारी इंश्योरटेक फर्म्स भी आ गई हैं, स्टार्टअप्स which are helping manage the variety of roles which insurance industry is creating. Thank you, ma'am. Ma'am, what do you think the challenges this sector will face after the post-COVID era? Reshu, the challenges are too many. तभी तो हमारा इंश्योरेंस इंडिया में जो है पेनिट्रेशन बहुत कम है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज या एडवांस्ड कंट्रीज। बहुत कम पेनिट्रेशन है। आई मीन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसके चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अब नाउ फर्स्ट चैलेंजेस कि
हम लोग इजीली इसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। चलो अब तो थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन है, हेल्थ ऑनलाइन है, मोटर है ऑनलाइन है, या ट्रैवल भी आप ऑनलाइन दे सकते हो। बट बाय एंड लार्ज जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनका इजी सेलिंग नहीं है, जब तक कोई आए नहीं, कोई ब्रोकर मिले नहीं, कोई एजेंट मिले नहीं। सेल्स इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। टू इज डेटा मैनेजमेंट। जितना भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक कंपनी के पास इतना डेटा हो जाता है, एनीबडी कैन सेल दैट डेटा फॉर अमाउंट, है ना, एनी एम्प्लॉय एंड ऑल दैट। तो प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग हो जाती है एंड ऑल दोज थिंग्स, फ्रॉड्स होते हैं। इन ये दिस इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। एंड देन मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन होगा तो मोर एंड मोर फायरवॉल्स लगाने पड़ेंगे इनको फॉर साइबर सिक्योरिटी, की हैकिंग ना हो एंड अदर सिस्टम्स बैठ ना जाए, बिल्कुल बैंकिंग की तरह, है ना। एंड इनोवेशन इज अ मस्ट, कि आप जब तक टाइम के साथ इनोवेट नहीं करेंगे, अब जैसे इन्होंने कोविड में 3 महीने लगा लिए जब तक लोग मर नहीं गए और इंश्योरेंस कंपनीज को गया नहीं रेगुलेटर का डंडा कि यू हैव टू कवर, एवरीवन वाज सेइंग वी विल नॉट कवर कोविड, इट इज नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी। अरे भाई कोविड कभी हुआ ही नहीं है, पैंडेमिक, तो यू हैव टू इनोवेट अकॉर्डिंगली विद द प्रोडक्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। So innovation is a must, distribution is a channel, is a must, and perception is the major issue. You know, claims में अगर delay हो जाएगा तो एक आदमी already सताया हुआ है, उसको financial loss हो गया है, you have suffered, and then उसके ऊपर आप बोलो कि ये नहीं वो नहीं है, you keep delaying. So fast settlement of claims is a major issue, which of course is now getting addressed because of digitalization, but then it still has to come to the expectations of the people so that they feel happy if they are covered, the claims are going to get settled as fast as possible. Thank you, ma'am. Thank you. You took out your precious time for this session and enlighten us on this topic. Thank you so much. Thank you, Reshu. Thank you for giving me this opportunity. In fact, it's such a vast topic, you know, it is very difficult to cover it in such a short time. But nonetheless, I've tried my best, whatever, you know, on the common man's parlance I could convey. Thank you. Thank you, ma'am.